Healthy morning students. Today we are going to solve question number 4 to 7 of exercise 4.3. Let us start. Question number 4. The question is, in a class test, Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks. We want Shefali's marks in maths and science. See, anyone will suppose x. We know very well that whatever variable come afterward, that we suppose x. If I read first sentence that in a class test, Shefali's marks in maths and English come afterwards. So I will suppose Shefali's marks in English to be 30. Sorry, x. Let now sum of marks is 30. So as I told you, okay, whenever we suppose the things get reversed. If sum given will do subtract, difference given will add, but only at the time of supposition. But when you apply or when you form the equation at that time, whatever thing given, that you have to apply. Okay, so here sum of marks given and marks in English we have suppose x. So Shefali's marks in maths will be 30 minus x. Okay, I will do opposite to this sum, minus. Remember one thing, whenever do subtraction, write greater variable first or greater number first. It's sum and sum is always greater. So we'll write sum first. Now we'll form the equation. The first sentence we have used, had she got 2 marks more in maths, 3 marks less in English. So now she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English. Now Shefali's marks in English. She got 3 marks less in English. So in English she is having x marks. So in English her mark will be x minus 3. And her marks in maths. In maths her mark is 30 minus x. But she got 2 marks more in maths. She got 2 marks more in maths. More, that means addition. So in mark of maths will add 2. So 30 plus 2 will be 32 minus x. Now we are having new marks of Shefali in maths and English. Read further. Now we form the equation. The product of their marks would have been 210. Product of marks is equal to 210. So here left hand side we have to write product of the marks, that means marks of English and maths. So marks of English x minus 3 and maths 32 minus x equals to 210. Let us multiply x into 32, 32x, x into x, x square, 3 into 32 minus 96. Minus into minus x plus 3x equals to 210. Okay, so 32x plus 3x will be 35x minus x square minus 96 equals to 210. Shift all variable towards right hand side. Why? Because x square is negative. x स्क्वायर अगर पॉजिटिव है
टू साइड सारे वेरिएबल शिफ्ट करेंगे। ये अगर x स्क्वायर नेगेटिव है तो सारी टर्म दूसरी साइड। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0, राइट हैंड साइड ऑलरेडी हैव 210 plus 35x will become minus 35x, minus x square will be plus x square and minus 96 will be plus 96. So now we'll have 0 equals to arrange the term x square. See, when you arrange the term, the sign will remain as it is, minus 35x 210 plus 96 plus 306. Now I'll find out two factors so that multiplication become 306 and addition minus 35. Let us factorize. Two ones are, fives are, threes are, 3 51s are, 3 17s are, 7 and 1s are. In first method I told you to make the half. अगर मैं half up करता हूँ तो these two factor will be in first group. So 3 to the 6 and 51. If I add 51 and 6, I will not get 35. So what I will do? I will give one more factor to first group. So all this factor will be together. 3 3s are 9, 2s are 18. And 17 along. अब ऐड करने पर माइनस 35 लाना है। ऐड करने पर, ऐड मतलब सेम साइन। सेम साइन किसकी देने की? मिडिल टर्म की। माइनस माइनस सेम साइन ना, सो इट्स माइनस, इट विल बी माइनस माइनस। अगर ये प्लस लाना होता तो प्लस प्लस करते। हाइट स्क्वायर यू आर एबल टू सी x, so x minus 18 and x minus 17 equal to 0. So x minus 18 equals to 0 or x minus 17 equals to 0. So x equal to 18 or x equals to 17. So x equal to 18. If I take x equal to 18, then Shefali's marks in English will be 18 and maths will be 17 क्योंकि 18 और 17 है। So Shefali's marks in English will be 18 and her marks in maths will be 17. But if I take x equals to 17, then marks in English will be 17 and marks in maths will be 18. देखो दोनों पॉजिटिव आते तो दोनों आंसर होंगे, यानी अगर उसके मार्क्स इंग्लिश में 18 है तो मैथ्स में 17 होंगे, और अगर इंग्लिश में 17 है तो मैथ्स में 18 होंगे। क्लियर? गो थ्रू दिस। Clear? Let us solve next. Question number 5. Here it is. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than shorter side. If longer side is 30 meter more than shorter side, find the sides. So here we want shorter side and longer side. We want sides of a rectangular field. We know very well
कि rectangle have only two sides, length and breadth. So if I draw the figure, A, B, C, D, and this is diagonal. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than shorter side. So we know very well that whatever side come afterwards, that we suppose x. The diagonal of a rectangular field 60 meter more than shorter side. Shorter side come afterward, so we'll suppose shorter side as x. Let in rectangle ABCD, shorter side is equal to x meter, now diagonal of a rectangular field is, that means equals to 60 meter more than that means dash plus 60. If it is 30 meter more than, then we'll write dash plus 30. If it is 50 meter more than, we'll write dash plus 50. But it's 60 meter more than, so dash plus 60. And after then what we have, shorter side, that we'll write in the dash. So diagonal is AC, it would be x plus 60 further. And the longer side, we know very well, in the rectangle the longer side would be length, that is BC. So the longer side is, that means equals to 30 meter more than that means again dash plus 30. After then whatever thing we have, we'll write inside the dash. Shorter side is x, so it will be x plus 30. So now all the information given in the equation we have used. So whenever all the information is used, you have to get idea from the figure to form the equation. See, this is the shorter side AB, okay, diagonal AC and longer side BC. You have to find a relation between AB, BC and AC. You know very well that these three are the side of right angle triangle ABC. And in right angle triangle ABC we can apply Pythagoras. So let us apply Pythagoras. In right angle triangle ABC, angle B is 90 degree. RAD means right angle triangle. Apply Pythagoras. Square of hypotenuse AC square is equal to sum of square of other two sides. So other two sides are AB and BC. Square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. AC is x plus 60. We'll have x plus 60 to the whole square. AB x and BC x plus 30 to the whole square. So whenever we have bracket square, we get three terms. Square of first term plus dash square of second term, 60 square. Okay, square of these two. How will we get a middle term? By multiplying 2 with all the variable given in the bracket. 2 को इन दोनों से multiply करना पड़ेगा. 260 था 120 और ये x is equal to x square. Here also bracket square will get three terms. Square of first term minus dash square of 30. Now middle term will be multiplication will do 230 the 60 x from both sides x square cancel. So we will have 120x plus 3600 is equals to x square minus 60x plus 900.
So here x square is positive. We'll shift all term towards right hand side. So we will be having 0 equal to x square minus 60x plus 900 plus 120 will be minus 120x plus 3600 will be minus 3600. So here we have x square minus 60 and 120 minus minus plus 120 and 60 180x plus 900 minus 3600 plus minus minus 36 minus 900 2700 and greater number sign. So what we'll do, we'll factorize. We require two factor, with multiplication should be 2700 and subtraction 180. So what we'll do, we'll factorize 2700. Let us factorize. Two ones are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 0, 2 6s are 12, 7s are 14, 5s are 10, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 5s are 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 25s are 5 5s are and 5 1s are. First what we are doing, half. Let us do half. 1 2 3 4 5 6 7 factor we have. So I will make first group of 4 factor, this 4. 3 3s are 9, 2s are 18, 2s are 36. And here 3 5s are 15, 5s are 75. But if I subtract by doing subtraction, we require 180. But if I subtract this, just a minute. Okay. Here mistake we have done na. It's minus. So here this plus na. BC is x plus 13. I have written minus. So plus plus. Okay. So 60x will be plus and this 60x will be plus. So minus plus minus 120 minus 60 60. Okay. See, one shorter method I am telling to you. Whenever two zeros are there, you can apply that method. वो easy रहेगी आपके लिए फैक्टराइजेशन के ऊपर में. तो देखो कैसे, ये तभी कर सकते हो जब पीछे 2 zeros है. 2 zeros को रिमूव कर दो. 27 से सोचो, 27 का फैक्टराइजेशन अगर हम करें, इसी में ग्रुप फॉर्म कर देने का. 3 9s are 3 3s are 3 1s are. ये दो की पेयर बनाओ 9. ये अब हमने क्या किया था, 2 0 को ऐड किया था ना, 2 0 को ऐड किया था. तो क्या करने का, एक 0 इसको दे दो, एक 0 90 को दे दो और एक 0 30 को दे दो. आगे 90 माइनस 30 60 आ गया. लेकिन पीछे जब 2 0 है तभी ये कर सकते हो. अगर इससे आपको आइडिया नहीं आता है तो वापस फैक्टराइजेशन. बाकी 99% पीछे अगर 2 zeros है, इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन हो ऑड है तो नहीं कर सकते, 3 zeros है तो नहीं कर सकते. ओनली इफ इट हैव 2 zeros. हाइड 2 zeros, फैक्टराइज रेस नंबर एंड देन डिवाइड 2 zeros. एक जीरो फर्स्ट फैक्टर को, दूसरे सेकंड को. ऐसा नहीं आप दोनों जीरो एक फैक्टर को भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है हमें क्या लाना है. सो बाय डूइंग सब्ट्रैक्शन आई वांट -60. सब्ट्रैक्शन मुझे करना है डिफरेंट साइन. तो क्या करने का, मिडिल टर्म की साइन ग्रेटर नंबर को अब डिफरेंट बनानी है. माइनस तो ये प्लस, so we'll have -90 and plus 30. Hide the square. X minus 90 and x plus 30 equal to 0. So x minus 90 equals to 0. X plus 30 equals to 0. So
So x will be 90 and x equals to minus 30, which is not possible. Why? Because we have supposed x to be shorter side, and side, just a minute, and side of the rectangle can never be negative. So now we are having answer. Sides of rectangular field, shorter side x equals to 90 meter and longer side x plus 30. 90 plus 30 is equals to 120 meter. Clear? Go through this. Okay. Next one is clear. Let us solve next. यार Next is question number 6. The question is the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find two numbers. We require two numbers, and here it is given give it two number, larger and smaller. So whatever number come afterward, we'll suppose x. Read. The difference of square of two number is 180. It's not giving us any information. The square of the smaller number is 8 times the larger. Larger come afterwards. So we'll suppose larger number to be x. Okay. We'll suppose larger number to be x. Smaller number. And now we'll find out smaller number. Relation given. From first sentence we'll find out smaller number. The difference of squares of two number is 180. The difference of square of two number is 180. That will give us formula or equation. We'll find out smaller number from here. See, it is little bit different type of. The square of the smaller number. From the beginning of the sentence they are saying the square of the smaller number. So here first I have to do square of the smaller number. Square of the smaller number is, that means equals to 8 times multiply the larger number which is x. You might be thinking कि डिफरेंस दिया है तो वहां से हम फाइंड नहीं कर सकते ना, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हो रही है? स्क्वायर की वजह से. If only difference is given, suppose if it is written कि difference is 180, then we can find out smaller number
बी एक्स प्लस 180 है ना, बट the square is given over here, so due to that only we cannot use this difference to find out the smaller number, so we use this sentence. This sentence is also a little bit complicated, but compared to first it is easy. See, whatever thing given in the question, follow that. The square of smaller number, clearly written square of smaller number, so I will do square of smaller number is equals to 8 times multiply larger number x. But whenever we suppose any number we are not using square, so I must have to shift this square towards left hand side, sorry, right hand side. So if I want to remove this square, what I should do? If you want to remove the square, you have to do root on other side, so smaller number will be under root 8x. Now we'll form the equation by using first sentence, the difference of square, the difference of square of two numbers is 180. Difference, that means subtraction है ना, square of two number, with two number larger smaller, तो square of larger x smaller root x, difference minus square of two number, that is square of this x square and square of root 8x to the whole square. So x square, this square root cancel, we'll have minus 8x, go to 180, shift 180, x square minus 8x minus 180 equals to 0. Now we find out two factor of 180, so that multiplication become 180 and subtraction minus. Let us factorize. 2 90s are 2 45s are 3 15s are 3 5s are 5 1s are. Now same way we'll do half. 2 to the 4 is 12 and 3 5s are 15. Okay, so by doing subtraction we want 8, so 15 minus 12 it will not be 8. So what we'll do, we'll give one more factor to the first group. पहले फर्स्ट ग्रुप में हमने ये 3 नंबर्स लिए थे, अब हम ये भी देंगे इसको. 2 to the 4 is 12 is 36 and 5. 36 और 5 का सब्ट्रैक्शन करने पर 8 नहीं आएगा. तो पहले दो स्टेप हमने फॉलो कर दिए, हाफ कर दिया, ऊपर के पैर को एक नंबर ज्यादा दिया. अब क्या करेंगे, उल्टा. सेकंड है ग्रुप, उसको एक नंबर ज्यादा देंगे. तो अभी इसको एक नंबर ज्यादा देके अगर देखते हैं तो 2 to the 4 and 3 to 9 5 to 45. अब 45 और 4 को माइनस करने पर भी 8 नहीं आएगा. अब आपको क्या करना, देखो स्टेप्स में आपको समझा दूं. स्टेप्स कैसे हैं, फर्स्ट डू हाफ, चेक करो हाफ करके आंसर आता है. सेकंड, नाउ गिव वन फैक्टर टू फर्स्ट ग्रुप. एक फैक्टर पहले ग्रुप को लेके देखो, आता है, नहीं आता, तो एक फैक्टर दूसरे वाले ग्रुप को लेके देखो, फिर भी नहीं आता है. तो अब क्या करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट, आगे और पीछे ऐसे नंबर लेके ग्रुप बनाने हैं. यानी एक नंबर आगे की तरफ लूंगा और एक पीछे की ओर, इस तरह से हम ग्रुप बनाएंगे. अब 5 नंबर है तो पहले ग्रुप में मैं 3 नंबर लेता हूं. क्या लेता हूं, 3 नंबर. ठीक है, देखते हैं. देखो फर्स्ट और लास्ट लेने का, देखो ये फर्स्ट और लास्ट में लू. 5 2 10, 2 3 6 3 80, आगे 18 माइनस 10 8. समझ में आ रही है बात आपको. हाफ हाफ करने पर नहीं हो रहा है तो फर्स्ट और लास्ट नंबर लेके ट्राई करने का भी. तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब डिफरेंट साइन. तो ग्रेटर नंबर को कौन सा साइन देने की, ये वाली. ग्रेटर नंबर को ये वाली साइन दी. अब डिफरेंट साइन बनाना है, तो ये माइनस तो ये प्लस. हाइट स्क्वायर, यू विल हैव x, सो x प्लस 10, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 18 इक्वल्स टू 0.
x equals to -10 which is not possible and x equals to 18. ठीक है. Now why -10 is not possible? Because we have suppose x to be number. हाँ, अब आप सोचोगे नंबर तो नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, हम लार्जर नंबर तो x फाइंड कर देंगे, लेकिन वही x की वैल्यू जब यहाँ स्मॉलर नंबर फाइंड करते टाइम रखेंगे x की वैल्यू नेगेटिव, at the time you have to find out root of the negative number, and root of the negative number is not at all possible. We cannot find out root of the negative numbers. Okay. Root of negative numbers is not possible. So that means the larger number is x equals to 18 and the smaller number root 8x. 8 into 18 144 square root of 144 12. Clear? Go through this. Clear? Let us solve next one. Here it is. The train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have been taken 1 hour less for the same journey. Find speed of the train. As I told you, whenever speed related sum is there in the chapter, the sum either will be related to increasing speed or either decreasing. So first of all, what will suppose? Here we want speed of the train, so that will suppose x. Let speed of the train x km per hour. Now check it out whether speed increases or decreases. The train travel 360 km. So 360 km is the distance at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more that means क्या? Speed is increases. So we have increased speed. Increased speed. देखो पहले ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब उसमें 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ी. सपोज ट्रेन पहले 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी इंक्रीज हुई, तो अब कितनी हो गई होगी 25. प्लस करने का इंक्रीज हो रही है मतलब. सो प्रीवियसली द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज x किलोमीटर पर आवर. इफ 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीजेस, सो नाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी x plus 5 किलोमीटर पर आवर. Now distance travel is how much? 360 km. Now after writing this, we know very well कि we are writing the format according to my name तुषार दवे सर. देख उल्टे से तुषार का मतलब टाइम, visually measured in hour, दवे का मतलब डिस्टेंस measured in kilometer, and speed
which is generally measured in kilometer per hour. Okay, so two speeds we are having, x and x plus 5. Distance will remain same, 360. Now we'll find out time. We know the formula of time. Again my name, Tushar Dave sir. Tushar Dave sir. So time is distance upon speed. Distance 360. Speed x. Now time t2. Distance 360 upon x plus 5. Now here speed is 5 km per hour more. Speed increases. Speed increases. So when your speed is increases, the formula will be t1 minus t2 equals to t. है ना? If it is decreases, then the formula will be t2 minus t1 equals to t. Let me explain how this formula form. चलो मैं आपको बताता हूँ. Suppose कि आप ट्रेन में जा रहे हो. पहले ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी. कितनी? 50 किलोमीटर. अब उसकी जब 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी ट्रेन की, ठीक है, तो आपको जो टाइम लग रहा था पहुंचने में, वो लग रहा था 7 आवर्स. जब ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगी, एक सिंपल लॉजिक है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा. जब ट्रेन की स्पीड बढ़ी तो टाइम 6 आवर लगा, यानी टाइम कम लगा. तो आपको कितना टाइम कम लगा? 1 आवर. कितना टाइम आपको कम लगा? 1 आवर. तो मतलब जब भी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज होगा, है ना? तो मुझे अगर ये दो टाइम का रिलेशन बिठाना है तो ग्रेटर टाइम है उसको पहले लिखा जाएगा, स्मॉलर टाइम बाद में. मतलब स्पीड जब स्मॉलर होगी तब टाइम ग्रेटर होगा, और जब स्पीड ग्रेटर होगी तो टाइम स्मॉलर होगा. तो यहां पर वही करना है कि सिंपल है कि यहां पर स्पीड इंक्रीज हो रही है. स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब ये टाइम उसको कम लगेगा, ये टाइम स्मॉलर होगा, है ना? स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम लगेगा ना, तो ये टाइम स्मॉलर होगा, तो ये टाइम ग्रेटर होगा. इसे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा. t1 माइनस t2 इक्वल्स टू t. t1 इज 360 माइनस x, 360 अपॉन x माइनस t2, 360 by x plus 5 equals to t. Where is time? 1. तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसको 1 आवर लेस लगता है. देखो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हुई तो 1 आवर लेस लगा, तो आपने टाइम का रिलेशन क्या लिखा? ग्रेटर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम इक्वल टू जितना टाइम उसको कम लगा वो. तो वैसे इन दोनों में ग्रेटर टाइम t1, स्मॉलर t2. तो ये अगर ये दोनों टाइम का सब्ट्रैक्शन करूं तो उसको कितना टाइम कम लगा वो यहां पर मिलेगा. जैसे मैंने ये टाइम का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना टाइम उसको कम लगा? 1 आए यहां पर, वैसा ही है. लेट अस सॉल्व. व्हाट विल डू? LCM. LCM of x plus 5 and 1 will be x plus 5. Wherever whatever factor is missing, we'll multiply. X here we have, so x plus 5 missing. X plus 5 we have, x missing, and here both x plus 5. So 360 multiply with x plus 5 minus 360 into x equals to 1 will multiply with x plus 5 multiply 360 into x, 360x plus 360 into 5 1800 minus 360 equal to x square plus 5x. Let us simplify. तो 360x plus minus minus 1800 minus 360, sorry ये this minus 360x plus 360x cancel,
we'll have 1800 equals to x square plus 5x. Shift 1800, we will be having x square plus 5x minus 1800. देखो वापस 20 आए तो ट्राई करने का 20 को हाइड करो तो हमें क्या नंबर मिले 80 के फैक्टराइज करो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा तो मैं अगर हाफ करूं तो 2 3 जा 6 और 3 6 और 3 6 के पीछे 0 लगाओ 1 और 3 के पीछे 0 लगाओ 60 में से 30 माइनस करने पर 5 नहीं आता है तो 2 0 हाइड करने के बाद पहले ये मेथड फॉलो करके देखो आंसर आता तो ठीक है अगर नहीं आता तो फिर अपनी मेथड पूरी फैक्टराइजेशन वाली मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी लेट अस अप्लाई 2 900 2 450 2 225 3 Now we'll do half. How many factor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना? Half. So 1, 2, 3, 4 factor together. 2 to the 4 to the 8 is the 24. 3 5 the 15 3 the 45. But 45 minus 24 करूँगा तो 5 नहीं आएगा. तो ऊपर वाले पेयर को और एक नंबर ज्यादा दो 4 की जगह 5 नंबर ले लो 1 2 3 4 5 यहां तक तो 2 to the 4 to the 8 3 the 24 3 the 72 72 minus 25 तो भी नहीं आएगा अब नीचे वाले ग्रुप को एक नंबर ज्यादा दो पहले हमने 3 दिया अब 4 नंबर दो देखो 4 एक साथ में 5 5 the 25 3 the 75 2 the 150 हो 150 आया 150 minus 8 नहीं आएगा देखो पहला स्टेप ये है हाफ करो सेकंड ऊपर वाले ग्रुप को एक नंबर ज्यादा देते जाओ थर्ड नीचे वाले ग्रुप को एक नंबर ज्यादा देते जाओ ये 3 स्टेप में भी आंसर नहीं आता तो अब वो क्या करना है फर्स्ट और लास्ट नंबर को लेके ग्रुप बनाने हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को लेके ठीक है चलो अब वो ट्राई करते हैं सही यहां से ऐसे लेते जाने का तो मैं क्या आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है देखो 2 to the 4 to the 8 5 the 40 ये थोड़ा प्रैक्टिस से आइडिया आएगा बीच वाले नंबर बचे 3 3 the 9 5 the 45 आ गया 45 minus 40 5 सबट्रैक्ट करना है और डिफरेंट साइन पहले ये मिडिल टर्म के साइन ग्रेटर नंबर को देने की तो -45 अब डिफरेंट बनाने ये माइनस कर दिए प्लस तो हाइड द स्क्वायर hide this square you will get x so x minus 45 or x plus 40 equals to 0 so x will be 45 and x equals to minus 40 not possible here reason you have to write by your own speed can never be negative what reason you going to write speed can never be नेगेटिव और इसके लिए क्या लिखोगे आप ये हमारा आंसर है फाइनल आंसर विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर गो थ्रू दिस clear so let's end this lecture bye have a nice and safe day